All right, we are starting with the session. And, last time we have already completed with U bending. Now we are going on to, sorry, we had completed edge bending. The diagram was completed, a write-up was still remaining. Then we'll move on to other section. Edge bending का आप लोग लिख लो. The diagram has been drawn. A write-up is remaining. Point number 1 for edge bending. It involves cantilever loading of sheet metal. It involves cantilever loading of sheet metal. Point number 2. In this method, a pressure pad is used to hold the base of the workpiece. In this method, a pressure pad is used to hold the base of the workpiece against the die, whereas the punch forces the workpiece to yield, and bend over the edge of the die. Now coming to the explanation part of what basically edge bending is, let us take a simple example. अब अगर हम x और y एक्सिस की बात करें और we talk about angle, so if it is inverted this side, this is what 0 degrees, and this is 180 degrees. The object or the workpiece is bending here, so this makes an angle of 90 degrees. मगर अगर हमने वही वर्कपीस को ऐसे बेंड किया, so this angle that is formed is obviously less than 90 degrees. This is 90 degrees. This is less than 90 degrees, which is possible in edge bending. मगर if it is more than 90 degree, मतलब इस डायरेक्शन में, if it is more than 90 degree, मगर मतलब एंगल हमने ऐसे बेंड किया, तो यहाँ पे ये डिजाइन प्रोस्पेक्ट में इन दिस डिजाइन इट इज नॉट पॉसिबल टू बेंड, बिकॉज हमारा जो डाई है वो अंदर की तरफ बेंड होगा और पंच भी अंदर की तरफ बेंड होना, पंच को भी, फॉर एग्जांपल दिस इज द डाई एंड दिस इज द पंच, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये डिजाइन पॉसिबल नहीं है. तो फॉर दिस वी विल हैव टू टेक अनदर पंच एंड डाई सेट, मतलब दो ऑपरेशन. अगर मुझे दिस इज अक्यूट ए सी, this is acute angle ACUTE, acute angle that is less than 90 degree, so that is possible. Magar obtuse is not possible, more than 90 is not possible, because वहाँ पे पंच और डाई का पूरा डिजाइन चेंज होता है, so that is not possible in edge bending. तो ये आपको ध्यान में रखना है. alright, point number 3 लिखिए. The edge bending operation is limited to bends of 90 degrees or less. Is limited to the bends of 90 degrees or less. ये important point है. The edge bending operation is limited to bends of 90 degrees or less. Next point.
The dies used for edge bending is called as whipping, WIPING. The dies used for edge bending is called as whipping dies. Full stop. They can also be designed for bend angles greater than 90 degrees. They can also be designed. This is talking in terms of die. This is not talking in terms of workpiece. They can also be designed for bend angles greater than 90 degrees. ये important है. Due to next point, due to pressure pads, due to pressure pads, comma, whipping dies are more complicated and costly due to pressure pads. Whipping dies are more complicated and costly as compared to V dies, capital V dies. Last point, these dies are used for high production work. These dies are used for high production work. Right? Then we have next topic, bending के अंदर ही edge bending हो गया हमारा. अब bending के अंदर next topic is bending in a 4-slide machine. You can take the write up, leave space for the diagram and take the write up. First point, we are talking about bending in a 4-slide machine. अब बेंडिंग इन अ 4-slide मशीन में जो वर्टिकल डाई दिख रहा है आपको, ये वाला जो वर्टिकल डाई है, ये दिस इज द मेन ड्राइवर. इसके रिलेशन में बाकी जो लैटरल मूवमेंट होता है ये दोनों डाइस का, हॉरिजॉन्टल डाइस का, ये होता है. मतलब यहाँ पे मोटर कनेक्टेड है, हाइड्रोलिक सिस्टम यहाँ पे कनेक्टेड है, एंड दिस इज अप्लाइंग ऑल द फोर्स. दिस इज द मेन डाई जो कि मूवमेंट कंट्रोल करता है इन दोनों हॉरिजॉन्टल डाइस का. तो अगर ये नीचे जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे हॉरिजॉन्टल डाइस, और अगर ये ऊपर जाएगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल डाइस है वो एक्सपैंड, मतलब वो ओपन होंगे. तो दिस इज द मूवमेंट, दिस द कंट्रोल सिस्टम दैट इज एसोसिएटेड विद बेंडिंग इन अ 4-slide मशीन. चारों तरफ से वो ऑब्जेक्ट को या वो वर्कपीस को इन लोग ये जो मशीन है वो कंप्रेस करता है टू अ डिजायर्ड शेप. राइट. पॉइंट नंबर 1, this type of machine is used for bending of relatively short pieces. This type of machine is used for bending of relatively short pieces. Next point, these type of machines are available in different designs. These type of machines are available in different designs. And the last point, the lateral movement of the dies, the lateral मतलब ये जो horizontal movement दिख रहा है ना आपको, वो the lateral movements of the dies are controlled. The lateral movement, MOVEMENTS, movements of the dies, DIES, dies are controlled with the vertical die movement, are controlled with the vertical die movement to form the part of desired shape. To form the part of desired shape. मतलब वर्टिकल डाई लैटरल मूवमेंट को कंट्रोल करता है इन ऑर्डर टू फॉर्म द पार्ट ऑफ डिजायर्ड शेप. राइट. दिस कंप्लीट्स बेंडिंग इन अ 4-slide मशीन. अब बेंडिंग हमारा हो गया. बेंडिंग हो गया मतलब हमने स्टार्टिंग में जब हमारा लेक्चर, जब फर्स्ट लेक्चर चालू हुआ था, आई हैड टोल्ड यू देयर आर ऑपरेशन, देयर आर वेरियस ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ शीट मेटल. वन बेसिक क्लासिफिकेशन इज कटिंग ऑपरेशन. अब कटिंग के अंदर वो था बीपी, एनपी, एसएलएस. तो हमने कटिंग ऑपरेशन हमारा हो गया था. नाउ वी हैड गॉन टू नॉन कटिंग ऑपरेशन. नॉन कटिंग ऑपरेशन में जितना भी ऑपरेशन है जिसके अंदर कटिंग ऑपरेशन नहीं होता है, दोज आर कॉल्ड एज नॉन कटिंग ऑपरेशन. और उसका जो मैंने आपको निमोनिक्स दिया था वो था बीपी, एनपी, सॉरी, BCDEF, बेंडिंग, कॉइनिंग, ड्रॉइंग और वो सब.
तो बेंडिंग के अंदर हमारे पास 7 टाइप था। तो वी हैड स्टार्टेड विद नॉन कटिंग ऑपरेशन बेंडिंग, एंड बेंडिंग में वी हैड डन 7 टाइप, ए बी सी डी ई एफ जी, ये जी तक हमने ऑपरेशन कर लिया। अब हमारा आता है बी पी एन पी बी सी डी ई एफ ना, तो उसके अंदर एक है ड्राइंग। तो दिस इज टॉपिक नंबर 2 आफ्टर बेंडिंग, ड्राइंग। तो ड्रॉ द डायग्राम, लीव स्पेस फॉर द डायग्राम एंड टेक द राइट अप। अब ड्राइंग के अंदर देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ड्राइंग, वो मैं आपको बताऊंगा। एक होता है शैलो ड्राइंग, एक होता है मॉडरेट ड्राइंग, एक होता है डीप ड्राइंग। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज होते हैं, वो वाला जितना भी सिलेंडर बनता है, दोज आर कॉल्ड एज डीप ड्राइंग ऑपरेशन। फिर हमारे घर में पानी पीने के लिए वी हैव कप्स या ग्लास, दोज आर कॉल्ड मॉडरेट ड्राइंग एंड शैलो ड्राइंग। वो अलग अलग टाइप के वेसल्स होते हैं हमारे पास। देन पैन्स होते हैं, फ्राइंग पैन हुआ, दोज आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग ऑपरेशन दैट आर यूज्ड for different components. All right, so draw this diagram and take down the first point in drawing. In this operation, punch forces a sheet metal blank. In this operation, punch forces a sheet metal blank to flow plastically. Punch forces a sheet metal blank to flow plastically into the clearance between the punch and the die. Into the clearance between the punch and the die. Last point. Finally, comma, the blank takes a shape of a cup. The blank takes the shape of a cup. Blank takes the shape of a cup. Alright. This is all about drawing operation. अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको 1 पॉइंट में लिखें, 2 पॉइंट में लिखें, 10 पॉइंट में लिखें। इट डजेंट मैटर। आपको ये जो सेक्शन है वो याद करने की जरूरत नहीं है। ऑल द टर्म्स दैट आर टेक्निकली करेक्ट एंड दोज आर एसोसिएटेड विद दैट ऑपरेशन एंड विद डिफाइन दैट ऑपरेशन कैन बी इंक्लूडेड इन द आंसर। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, and I will not recommend also that you all that you mug up the answer and write as it is. वो करने की जरूरत नहीं है। यू आर इन योर थर्ड ईयर, बहुत जल्दी आप फाइनल ईयर में पहुंच जाएंगे एंड देन यू विल फेस द एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्ल्ड वेर इन ये जो किताबी आंसर्स है वो आपको याद रखने के लिए कोई नहीं पूछेगा कि आपको याद है कि नहीं। यू विल हैव टू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट। तो मेन एम्फेसिस शुड बी गिवन ऑन द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड द नॉलेज ऑन द टेक्निकल टर्म्स। आपको सिर्फ वो याद रखना है कि टेक्निकल टर्म्स इसके अंदर क्या क्या यूज हुआ है एंड यू कैन फ्रेम द आंसर अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। एंड आई होप दैट आपको जितना भी मैं समझा रहा हूँ दैट यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, हमारा ड्राइंग हो गया। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज एम्बॉसिंग। तो ड्रॉ द लीव स्पेस फॉर द डायग्राम। डायग्राम आपके सामने है। there are 2 points in embossing. Embossing basically जो नंबर प्लेट होता है, जो नेम प्लेट होता है, या जो लोगो एक शीट मेटल पे डलता है, दैट इज कॉल्ड एम्बॉसिंग। एम्बॉसिंग तो आपने सुना ही है। यू कैन वॉच अ वीडियो ऑन एम्बॉसिंग एंड यू विल कम टू नो कि एम्बॉसिंग ऑपरेशन होता क्या है। एनीवेज यू पीपल नो व्हाट इज एम्बॉसिंग। पॉइंट नंबर 1, with the help of this operation, comma, specific shapes or figures are produced on the sheet metal. Specific shapes or figures are produced on the sheet metal. Point number 2, it is used for decorative purposes. It is used for decorative purposes or giving details like names,
or giving details like names, comma, trademarks, trademarks, comma, specification, specification, comma, etc. on the sheet metal, etc. on the sheet metal. The diagram is in front of you. Now coming to another section, we have forming operation. फॉर्मिंग ऑपरेशन का डायग्राम आपके सामने है. टॉपिक नंबर 4 फॉर्मिंग. ये एक टॉपिक है, उसके बाद कॉइनिंग ऑपरेशन है. दैट इज ऑल फॉर टुडे. फॉर्मिंग ऑपरेशन. पॉइंट नंबर 1, in forming operation, in forming operation, comma, sheet metal is stressed, sheet metal is stressed beyond its yield point. In forming operation, sheet metal is stressed beyond its yield point so that it takes a permanent set, so that it takes a permanent set and retains the new shape, and retains the new shape. Next point, in this process, in this process, comma, the shape of the punch and die surface, the shape of the punch and die surface is directly reproduced without any metal flaw, is directly reproduced without any metal flaw. Topic number, no, topic number nahi, point number 3 of the same topic, forming. This operation is used in the manufacturing of door panels. This operation is used in the manufacturing of door panels, comma, steel furnitures, comma, aircraft bodies, etc. Aircraft bodies, etc. Now we come to coining operation. Now we are starting with coining operation. This is topic number 5 and the last topic, coining operation. The diagram is right in front of you. You can leave space for the diagram and start writing the write up. Point number 1, in coining operation, in coining operation, comma, the metal having good plasticity and of proper size, the metal having good plasticity and of proper size is placed within the punch and the die. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैंक जो है, ब्लैंक का साइज is less as compared to the final shape of the product, of the component. सीन ऐसा रहता है कि हमने एक पर्टिकुलर साइज का ब्लैंक, ये जो कैविटी है बीच में, इसको बोलते हैं कैविटी. दिस इज एन ओपन कैविटी दैट इज देयर. लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू. ये जो कैविटी है, ये सेक्शन की, दिस कैविटी, दिस इज ऑन द पंच साइड, एंड ये जो कैविटी है, दिस इज ऑन द
दाई साइड। अब ये वर्क पीस, ये पंच जो है ये ऊपर की तरफ जाता है, दिस मूव्स अपवर्ड, द ब्लैंक, दिस इज ब्लैंक नंबर 1, दिस इज केप्ट हियर, इसको यहाँ पे रखते हैं, एंड द पंच फोर्सेस इटसेल्फ डाउनवर्ड विथ अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर। ये जो डाई होल्डर है, डाई होल्डर और ये जो डाई है, दिस इज द डाई ब्लॉक एंड दिस इज द डाई होल्डर, these are stable, stagnant, you can call it stable or fixed component of the machine, ये fixed location पे रहता है, the movement that is associated for the operation is actually taken into consideration by the punch. पंच सारा का सारा मूवमेंट करता है अप एंड डाउन, एंड देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्क्वीजिंग ऑफ दैट मटेरियल। ये जो ब्लैंक है उसको स्क्वीज करता है, और स्क्वीज करके ये जो कैविटी है ना आपको सामने दिख रही है, ये वाली कैविटी, इसको फिल अप कर देता है। और जब मेटल स्क्वीज होता है तो क्या होता है, वो पर्टिकुलर जो कैविटी है, ओपन कैविटी, इसका शेप ले लेता है, एंड देन यू गेट द डिजायर्ड शेप। so you can have different components of different shapes and sizes depending on what type of material। for example अगर आपका एल्यूमिनियम मटेरियल है या स्टील है, तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्सेस लगेंगे, एंड देन यू कैन गेट द फाइनल प्रोडक्ट। दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज, बट इसमें यही होता है कि आपको यहाँ पे प्रेशर और फोर्स ज़्यादा लगता है। राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, इन कॉइनिंग ऑपरेशन, in coining operation, comma, the metal having good plasticity, in coining operation, the metal having good plasticity and of proper size, and of proper size is placed within the punch and die, is placed within the punch and die, and a tremendous pressure is applied on the blank, and a tremendous pressure is applied on the blank from both the ends as shown in figure, from both the ends as shown in figure. Next point, under severe compressive load, under severe compressive load, comma, the metal flows in the cold state, there is no heating involved, इसीलिए यहाँ पे ये जो word है cold state, this is important, the metal flows in the cold state and fills up the cavity, and fills up the cavity between the punch and die, between the punch and die. Last point, this operation is used in the manufacturing of, this operation is used in the manufacturing of coins, comma, medals, 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 comma, ornamental parts, etc. Ornamental parts, etc. Right? The drawing is right in front of you. You can draw this diagram, and that will be all for today. We will meet in the next lecture, that is tomorrow.